A child's childhood is for learning. Don't use your childhood for earning. Put an end to child labor. We are children, let us live. Good morning everyone. Today we the students are here to celebrate Anti-Child Labor Day. Child labor is a very big social issue in our society. It is one of the major topics of international concern and is a blot on human society. You may have heard about child labor, but do you know what actually it is and who is responsible for it? The term child labor is often defined as the work that deprives children of their childhood, dignity and potential. It is harmful for their mental and physical development. The term child labor is a gross violation of human rights. The World Day, which is against child labor, is called Anti-Child Labor Day. The International Labour Organization sanctioned first holiday in 2002 that aimed to raise awareness and activism against child labor. It is celebrated to mark up the significance against child labor and to pay attention to the problem of child labor and find ways to eradicate it. Poverty and illiteracy are blamed for child labor. It's shocking to note that in most of the cases, the parents or relatives of the children coming from socially backward classes push their children towards child labor. In the words of Nelson Mandela, children are the greatest treasure. They are our future, but we often lend them bricks instead of books. छोटू, आया मालिक, जल्दी से मेरी गाड़ी साफ करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक। श्यामू। हाँ मालिक। जल्दी से मेरे जूते पॉलिश करो। ठीक है मालिक। मालिक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये तुम्हारा रोज का बहाना है। आज नहीं चलेगा, आज तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक। बाल मजदूरी एक व्यापार है। बचपन में खेलना बच्चों का अधिकार है। बाल मजदूरी है मानवता पर कलंक। इसे रोककर बनाओ समाज को अकलंक। बाल मजदूरी हटाओ, बच्चों का बचपन बचाओ। बाल श्रम बंद करो, बाल श्रम बंद करो, हम बच्चों को जीने दो। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। 2 दिन से भूखे हैं, कुछ तो दे दो बाबा। चलो हटो यहाँ से। Everyone says that children are the image and likeness of the God. Who are these gods begging on the road? Can you explain this to us? बाल श्रम बंद करो, हम बच्चे हैं, हमको जीने दो। Oh Harya, where are you? Coming, ma'am. Today you have to finish the household chores very quickly. Why? Are you expecting a special guest? No, today is my daughter Pinky's birthday party. Oh, it will be great fun today, and I'll get something yummy to eat as well. No, you have to serve the guests only. When all the guests are gone, you may eat. All right, sir. बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजदूरी रोक उनके चेहरे पर मुस्कान दे दो। शिक्षा से बाल मजदूरी को बिल्कुल दूर भगाएं और अपने देश को अंधकार से बचाएं। बाल श्रम बंद करो, बाल श्रम बंद करो, हम बच्चों को जीने दो। I am a child meant to be a soul that's fun, meant to learn and play, but every single day I am being burdened with work that isn't even mine. Working and losing my precious time. With my age being only 9, every single hour I am risking my life with the work that isn't even mine. And now finally I request to you to come save me from the sea of burdens and mistakes, and especially save me from work that isn't even mine. Poverty is one of the main factors that push her into work. Angel started working due to the financial strength of the family. She was first to quit school and look a job in the government factory. The job was difficult. She explained in a time of high demands. The workers have to work all night with a 1 hour break for a nap on the cockpit floor at dawn, after which they continue to work the whole next day.
The family's financial situation felt a feeling that she was unable to miss the work even when she was ill. After Angel and other child laborers were discovered FWF, the members planned remedication plan in action to offer support by money, help and opportunity to return this school. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। According to the Indian Constitution, it is punishable offence to have children below 18 years of age, so you can be put behind the bars. मजबूरी चाहे कितनी भी हो, बच्चों से मजदूरी ना कराए, जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बचपन की मस्ती थमाए, इनमें उड़ने को पंख लगाए। बच्चे होते हैं भगवान रूप, इनसे मजदूरी करवाना नहीं अनुरूप। बाल श्रम बंद करो, बाल श्रम बंद करो, हम बच्चे हैं हमें जी लेने दो। नन्हा नन्हा प्यारा बचपन, भोला वाला नन्हा बचपन, कितनी भी हो बड़ी मुसीबत कभी न चिंता करना बचपन। माँ की गोद में खेल कूद कर जीवन भर मुस्कुराता बचपन, राधा की खेल नगर का कृष्ण सुदामा जैसा बचपन। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। भारतवर्ष में आरंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के कई बाल रूप जैसे बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। लेकिन आजकल की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने कोमल बचपन को गर्त में जाने से रोकें? अब ये वक्त आ गया है कि देश के सुरक्षित भविष्य के लिए आपको यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। क्या आप ऐसे किसी मासूम की मदद करने को तैयार हैं?